Okay, folks. So, some of you are here, around 44, 47 people are here. Now we will start with this session. Just a quick, update on what we are and what we do is that I am Siddharth Rathore and I teach economics at Gargi College, and I am also teaching at multiple other places, one of them being the Labasna, where the civil servants get their training. The other place is IIPA, where senior bureaucrats and defense officers get their training. And I've been in teaching since last 9 years, and I hail from a family of professors. My family has served Delhi University for 100 years, and this is basically about me. I've done my grad from when in 2004 I was in your shoes. I started my graduation from Kirodimal College, and then I went to Delhi School of Economics for my masters. And then I had my stint with UPSC, and then a couple of years in the banking sector. And I've also done a master's in artificial intelligence and machine learning. Therefore, you will see a lot of my videos on programming languages like R and Python. And now I'm in my final year of law from Delhi University. So this is a brief of my background, and I've been helping students across the board to crack civil services exam, as well as their journey in their entire 3 years, or now in 4 years. And the agenda of the day is that how to go about this new program of NEP that is there. So ये हमारे agenda के साथ, and I'll be bilingual because a lot of our audience is maybe from Hindi background as well. So this is how we will go about it. If you have, no, I'm Akshar, I'm not a civil servant. I am a professor. I'm an assistant professor. But I do train. So if you have heard the place called Labasna, so Labasna is the place where the civil servants get their training. So I've been teaching there for some time now. So जो अगर आप select होते हो civil services में, तो सबका जो foundation course होता है वो लबासना में होता है, मसूरी में, Lal Bahadur Shastri National Institute of Administration. So I teach economics and public policy there. So I have taught the 96th batch, जो 2019 के officers थे, and 2020 के officers and 21 के officers. In October I was there for around 7-8 days. So some of you would be planning to go for civil services. How many of you plan to go for civil services? Raise your hands, folks. You can raise your hands if I think raising hands is an option. I will talk about everything, folks. Oh, we have a lot of people who plan to. So that's the idea. I help students connect to officers, and some of my students have now become officers. So this is what I do through this open network that we have, and I've had this wonderful group of students from previous batches who stay connected with me. So this is about networking with students. Now let me share my screen and let's quickly discuss about the NEP and everything. And if you have questions, I'll unmute you folks, and then you can ask whatever questions that you have in your mind. You can probably ask those questions. So let's see the timeline. I have drawn a kind of an analogy from F1. I'm a F1 fan. So what we are going to talk about is we are going to talk about why economics is tough, why is economists so successful. Then we are going to talk about the marking scheme. How do you earn credits? ये आपके पास questions हो सकते हैं. ये आपके कुछ questions होंगे. We'll talk about that. The structure of 4 years. What is the score structure? Type of degrees, major, minor. हम इसके बारे में बात करेंगे. Then we'll talk about these options of SEC. What are these options? How to choose these options? How to dovetail all of that in your career? And then some generic ज्ञान about how to make most of college life. ये एक major चीज़ है. How to improve on networking, opportunities that are available, and then some Q&A if you have in the end. We'll take those Q&A session as well. So let's quickly first talk about the generic structure first. आपको सबको structure समझ में आ जाना चाहिए, so that you have no problems in understanding कि ये 4-year course कैसे है. ठीक है. I'll have another session for BA program students क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा और ज़्यादा technical हो जाता है. So अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात करें, सबने ऐसा देखा है, ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस,
that you have 7 papers in your first semester where you have 3 cores, 3 core papers हैं जिसको हम बोलते हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर 1, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर 2, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर 3। ये आपके मैंडेटरी पेपर हैं जो आपको इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से ही लेना है। यू कांट टेक पेपर्स फ्रॉम एनी अदर डिपार्टमेंट, दीज आर मैंडेटेड पेपर्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स। एक आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो, आई विल शो यू दैट पेपर एज वेल। एक आपका मैथमेटिक्स है, इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स, और तीसरा जो आपका पेपर है वो इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स है। These are your 3 papers which are core. Then there is something called as a general elective. General elective किस चीज़ के लिए होता है कि आप इंटरडिसिप्लिनरी होने के लिए, कि आप किसी और सब्जेक्ट का पेपर आपको लेना होगा। तो अगर आपको सपोज मैथमेटिकल बेंट ऑफ माइंड है, आपको मैथ्स पढ़ना है, आपको मास्टर्स में जाना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जनरल इलेक्टिव मैथ्स का लीजिए। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलस शायद से ऑफर होता है, या लीनियर अलजेब्रा, आई थिंक कैलकुलस ऑफर होता है, तो यू कैन टेक दैट। अगर आपको शुरू से ही पता है कि मुझे मास्टर्स नहीं करना, मुझे मैथ्स में ज़्यादा नहीं जाना, तो यू कैन टेक से फिलोसफी का या पॉलिटिकल साइंस का, यू कैन टेक अ जी। एक आई थिंक फिलोसफी का होता है एथिक्स इन पब्लिक डोमेन विच मैप्स टू एथिक्स का पेपर जो GS 4 का पेपर होता है उसके साथ मैप कर जाता है। यू कैन प्रॉब्ली टेक दैट। माई पर्सनल एडवाइस वुड बी टू टेक अप मैथ्स, अगर आपका मैथ्स ठीक है तो। द रीज़न इज कि क्योंकि ये कोर्स बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल है, एंड बिकॉज ये कोर्स बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल है, इट हेल्प्स यू टू हैव मैथ्स इन योर बैकग्राउंड। बट दी कैवियट इज, मैं जो वार्निंग आपको दे रहा हूँ वो ये है कि मैथ्स टफ होगा, बट अगेन दिस इंटायर कोर्स इज टफ। So if this course is tough, apologies for the background noise, folks. I have a small kid at home. So if you see the general elective, तो general elective in any case ये course बहुत tough है। तो but आपको better होगा कि अगर आप ये course में अगर आप maths अच्छे से पढ़ लें तो। So there is this question by Khushi. Khushi, you are a panelist. You can unmute yourself. So again, maths is one option that you have. Yeah, sir. So few of the students maths as G. So maths again, मैं आपको पहले से one. My query was that they are interested in some other subjects. तो हर कॉलेज में अलग सब्जेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं, बट like going through yeah, go ahead Khushi. Okay, so they were interested in some different subjects, but they asked if maths is that important to choose in a G, or we can choose subjects from our interest also. Yes, you can. That you said maths is important. Yes, it is. Being an econ student, maths is really important. But they were like, will we get placements if we choose philosophy or some other subject other than maths? See, you can choose other subjects as well, but अगर आपका mathematical bent of mind है, and since maths was compulsory in any ways, maths was compulsory to take e-commerce, so I am assuming कि आप maths आपका ठीक ही होगा। but अगर आपका maths ठीक नहीं है, I would suggest then don't take up maths. But maths क्यों आपको helpful रहेगा? in any case आप 3 maths पढ़ने वाले हो। आप first semester में maths पढ़ोगे, second semester में intermediate maths पढ़ोगे, third semester में advanced maths पढ़ोगे। तो आप maths से तो भाग ही नहीं सकते हो, अगर आप चाहो तो भी नहीं भाग सकते हो। तो there is no point running around and beating about the bush। तो आपको मैथ्स पढ़ना ही है तो आप प्योर मैथ्स भी पढ़ लो साथ में। सो इट मेक्स सेंस अकॉर्डिंग टू मी। बट अगेन आपको अगर फोबिया है मैथ्स से कि नहीं मुझे मैथ्स नहीं करना है, तो ठीक है, यू कैन टेक अप फिलोसफी, यू कैन टेक अप पॉलिटिकल साइंस। that's an individual strategy that you can have. So again वो हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। Janvi, yes, the masters will be 1 year, reduced to 1 year. I'll talk about that as well. So therefore मेरा पर्सनल बायस है मैथ्स की तरफ, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। बट अगेन मेरे पर्सनल बायस के हिसाब से मत जाइएगा, आप अपना चूज कीजिए, बट डोंट चूज अकॉर्डिंग टू योर फ्रेंड्स। दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज जस्ट बिकॉज माई फ्रेंड हैज टेकन मैथ्स यू आर टेकिंग अप मैथ्स। that's not an optimal strategy to have. Then एबिलिटी एनहांसमेंट जो है ये फ्लिप मोड में चलता है। एक सेमेस्टर में आप एनवायरनमेंट पढ़ोगे, दूसरे सेमेस्टर में आप एक लैंग्वेज पढ़ोगे। सो वट एवर लैंग्वेज इज बीइंग ऑफर्ड यू कैन टेक दैट लैंग्वेज, एंड एक सेमेस्टर में आप एनवायरनमेंट पढ़ोगे। सो इट्स प्रीटी मच ओके। बट एनवायरनमेंट आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि स्पेशली अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, क्योंकि एनवायरनमेंट एक बहुत मेजर सेक्शन है फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल। सो इसीलिए आप एनवायरनमेंट ठीक से पढ़ना, वहाँ पर भी आपको फायदा करेगा, और एनवायरनमेंट के बिना आप प्रीलिम्स कभी क्लियर नहीं कर सकते। So therefore environment is an important paper that you should so there is a question. I'll also be displaying you questions here simultaneously.
So question is, yes, taking a minor will help you. If we take up maths as general elective and also maths as main, थोड़ा सा burden तो होगा. You can take computer science मानवी as GE, that will be a good option, but computer science का कौन सा पेपर है ये आपको देखना पड़ेगा. ठीक है, how does it help, and especially in data science it will help you. So stats का अगर जैसे KMC में शायद से stats है, तो stats भी will probably help you as well. So applied psychology can also Kushi help you. Applied psychology, why it can help you is because there's a new field called behavioral economics. उसमें psychology का बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो overlap आ जाता है. And maths, as I already told you, see, there is no perfect Lal Bahadur Mausam. There is no perfect option. There is no something called perfect. It's not a universal option. It's completely dependent on you. आप चेंज भी कर सकते हो. एक सेमेस्टर में आप जीई एक ले लो, दूसरे सेमेस्टर में आप जीई कोई और ले लो, बट ज़्यादा आप प्रॉब्लम में मत पाना, क्योंकि आपको 7 जीई चाहिए होंगे एक ही सब्जेक्ट के टू मेक इट अ माइनर. I will specifically ask you to take it up as a 4-year course, not a 3-year course. ठीक है. I'll get to AEC. अभी मैं AEC पे अभी तो मैंने अभी आपसे AEC का बारे में आपसे डिस्कस कर लिया है. तो AEC तो आपके पास कोई भी लैंग्वेज ऑफर हो रही है. एंड सारांश यू कैन टॉक टू योर कॉलेज की कौन कौन सी लैंग्वेजेस ऑफर हो रही हैं. यू कैन टेक एनी ऑफ दोज लैंग्वेजेस, बट ये फ्लिप मोड में चलेगा. एक सेमेस्टर में इन्वायरमेंट, दूसरे सेमेस्टर में लैंग्वेज. I'll get to skill enhancement and VSC. Marketing, I can't say whether the marketing will help you or not. Depends on कि आपको MBA करना है, तो आप probably you can go for marketing if you want to take it. CS, fine. CS could be a very good option. Again, you should have some kind of a background. जानवी गार्गी में स्टैटिस्टिक्स में माइनर आप नहीं कर सकते. इट्स ओनली अवेलेबल इन सर्टन फ्यू कॉलेजेस, विच इज KMC में जैसे अवेलेबल है और कुछ कॉलेजेस में अवेलेबल है. सायन, कॉमर्स एस जी, आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ कॉमर्स एस जी. वाई? बिकॉज आप मतलब कुछ वो स्पेशलाइजेशन नहीं हो पा रही होगी आपकी. तो यू कैन टेक इट इफ यू वांट टू गेट इनटू दैट कॉमर्स वाला फील्ड, बट नॉट अ ह्यूज फैन, क्योंकि हो सकता है आप पेपर रिपीट कर रहे हो. कॉमर्स भी हो सकता है ऐसे ही जी ऑफर कर रहा हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स टाइप. ठीक है. पूर्वा, अगर आपको DSC जाना, देयर इज नो यूज कि अगर आप मैथ्स नहीं ले रहे, आप बिना मैथ्स के DSC घुस ही नहीं सकते हो. ठीक है. सो देयर इज नो पॉइंट नॉट गेटिंग इनटू मैथ्स. अगेन I'll answer these questions later on. Let's get to the skill enhancement course. Now हर कॉलेज में स्किल एनहांसमेंट कोर्स बहुत डिफरेंट होंगे. ठीक है. अब आपको स्किल एनहांसमेंट कोर्स कौन सा लेना चाहिए ये डिपेंड करता है कि अगेन आपका बैकग्राउंड क्या है. अगर आपको डेटा साइंस के अंदर जाना है, अगर आपको इकोनॉमिक्स में अच्छा करना है, आई वुड टेक अप से स्टैट्स विद R. बट अगेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना थोड़ा मुश्किल होता है. आई ऑलरेडी हैव वीडियोज़. मेरा भी 4 दिन से मैं R ही पढ़ा रहा था श्यामलाल कॉलेज के अंदर. सो मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ R के ऊपर अवेलेबल हैं. यू कैन वॉच दोज वीडियोज़. I am going to take advanced spreadsheets in Gargi College. You can take advanced spreadsheets as well. Advanced spreadsheet आप इस सेमेस्टर में ले सकते हो, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप R ले लेना. तो आपको बेसिकली डेटा फ्रेंडली होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज अबाउट डेटा एंड एनालाइजिंग डेटा. तो वट एवर बी योर गोल, यू शुड बी गुड एट अंडरस्टैंडिंग डेटा एंड एनालाइजिंग डेटा. इसके लिए आपका सबसे पहले एक्सेल अच्छा होना चाहिए और R अच्छा होना चाहिए, या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए. सो यू कैन टेक एनी ऑफ दीज, but that does not limit to that. You can take multiple other options as well. जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो SEC ले लिया. अगर आपको बर्डन कम करना है तो कोई इजी SEC भी ले सकते हो, योगा वगैरह भी SEC आप ले सकते हो. बट अगेन मेरा पर्सनल मानना है कि आप SEC वो लीजिए जो आपको करियर में हेल्प करेगा, जो आपको एक स्किल ऐड करेगा. ठीक है. सो दैट इज ट्रू. एंड द अदर थिंग, जो अभी आकांक्ष ने एक क्वेश्चन पूछा है कि इज इट नेसेसरी टू ऑप्ट फॉर द सेम जी इन एवरी सेमेस्टर. नो, यू कैन स्विच योर जीज. कि आप एक सेमेस्टर में एक जी ले सकते हो, आपको अच्छा नहीं लगा, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप चेंज कर सकते हो अपना जी. दैट्स नॉट अ कंपल्शन. स्किल एनहांसमेंट कोर्स भी आप अपने अपने चेंज कर. अभी जो आपके पास लिस्ट आई है वो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की लिस्ट है, तो दैट्स नॉट अदर लिस्ट. अगर आप कंसल्टिंग करना चाहते हो दिव्यांश, तो कंसल्टिंग के लिए आई वुड से एक्सेल ले लीजिए. एक्सेल इज़ अ वेरी गुड कोर्स फॉर कंसल्टिंग. तो दैट विल रियली हेल्प यू, बिकॉज कंसल्टिंग में आपको एक्सेल का यूज़, डेटा फ्रेंडलीनेस का यूज़ आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होगा.
सो एंड स्किल एनहांसमेंट कोर्स कोई एक डिपार्टमेंट ऑफर नहीं करता, कॉलेज ऑफर करता है, तो आप किसी भी डिपार्टमेंट का आप स्किल एनहांसमेंट कोर्स ले सकते हो. So, coming to Divyansh's question, so Divyansh has asked a really relevant question जो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि कंसल्टिंग के लिए, क्योंकि बहुत लोग प्लेसमेंट जाना चाहते हैं, तो कंसल्टिंग के लिए क्या करना चाहिए. कंसल्टिंग के लिए मेरा पर्सनल एडवाइस है, 2 चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. एक, आपका एक्सेल और डेटा स्किल्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए. दूसरा, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स. यू विल सी माई प्रेजेंटेशन स्किल्स, and personally we have my team and I have presented to multiple forums. Labasna हो गया, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हो गया, वी हैव गिवन presentations to them as well. डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स को हमने दिया है. तो प्रेजेंटेशन स्किल और दूसरा आपका डेटा स्किल्स, ये अगर आपके अच्छे हैं तो आप कंसल्टिंग में बहुत अच्छा करोगे लाइफ में. इन जनरल आप लाइफ में अच्छा करोगे अगर आपकी ये 2 स्किल्स अच्छे हैं. सो again you will realize this when you will see the PPT कि PPT में कितना ज़्यादा अलग अलग तरीके से आप पावर पॉइंट्स बना सकते हो. ठीक है, मे बी बाय द एंड ऑफ दिस आई विल आस्क यू कि whether you like the PPT or not. मैं एक पोल क्वेश्चन. ठीक है, देन यू विल हैव दिस स्किल एनहांसमेंट कोर्स. तो स्किल एनहांसमेंट आप अपने तरफ से ले सकते हो. वैल्यू एडिशन कोर्स, अगेन हर कॉलेज में डिफरेंट वैल्यू एडिशन कोर्स है. आकाश गांधी, डिड आई misread your question? Okay. So maths in every semester, does it still make final outcome? I will answer that questions once I end to the end of it. कंसल्टिंग के लिए 2 स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एक डेटा स्किल्स, जिसके लिए एक्सेल इज द फाउंडेशन, एंड देन यू कैन डू आर और पाइथन, और एंड साथ में प्रेजेंटेशन स्किल्स. ये 2 बहुत अच्छे स्किल्स हैं. पीपल स्किल्स, ये सारे स्किल्स हैं जो आपको आने ही चाहिए. ठीक है. सो दिस स्किल एनहांसमेंट कोर्स में आप ऐसे स्किल्स ले सकते हो. एंड देन वैल्यू एडिशन कोर्स में आपके पास लिस्ट है, आई एम प्रोवाइडिंग यू द लिस्ट अगेन. सो उसके अंदर यू शुड टेक अप वैल्यू एडिशन कोर्सेज लाइक से एक आपको फाइनेंशियल लिटरेसी का, यू कैन टेक दैट. अगर कोई और कॉलेज कोई और ऑफर कर रहा है तो यू कैन टेक दैट. वैदिक मैथ्स एक बड़ा अच्छा आई थिंक वैल्यू एडिशन स्किल है. तो अगर आप कैट, जी मैट, GRE जैसे पेपर देना चाहते हो तो दैट इज अ वेरी गुड स्किल, क्योंकि वो आपको क्विक काउंटिंग सिखाएगा. तो दीज आर इंपॉर्टेंट स्किल्स दैट यू कैन पोजेस. सो आई वुड सजेस्ट दैट यू कैन टेक दीज ऑप्शंस. आई जस्ट टेक क्वेश्चंस फोक्स लेटर ऑन. पहले मैं एक बार आपको क्रेडिट सिस्टम पूरा समझा दूं, फिर आई टेक क्वेश्चंस. अब हर जो पेपर है उसके 4 क्रेडिट हैं. सो ये जो कोर पेपर हैं और जो इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, जो आपके मेन डिसिप्लिन वाले पेपर्स हैं, उनके 4 क्रेडिट्स हैं. जनरल इलेक्टिव के भी 4 क्रेडिट हैं, और जो AEC स्किल एनहांसमेंट और वैल्यू एडिशन कोर्स है उसके 2 क्रेडिट हैं. टोटल यू हैव 22 क्रेडिट्स इन एवरी सेमेस्टर. एवरी सेमेस्टर वर्क्स लाइक दिस. ठीक है, जैसा सेमेस्टर 1 दिखता है बिल्कुल वैसा ही सेमेस्टर 2 भी दिखता है. सेमेस्टर 2 के अंदर अगेन आपके पास 3 कोर पेपर्स आएंगे. ठीक है, यहाँ पर अब आपके पास इंटरमीडिएट माइक्रो आ जाएगा. एक आपके पास एक आपके पास मैक्रो का पेपर आ जाएगा. एक मैथ्स का इंटरमीडिएट आ जाएगा. एक स्टैट्स का इंटरमीडिएट आ जाएगा. एंड देन GE आप जरूरी नहीं है आप सेम ऑप्शन करो. आपको अगर किसी और का GE पढ़ना है, सपोज आपने पहले सेमेस्टर में मैथ्स पढ़ा, दूसरे सेमेस्टर में आपको लगा कि नहीं मुझसे मैथ्स नहीं होगा, यू कैन टेक अप से पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और व्हाटएवर यू वांट टू टेक. सो यू कैन चेंज. हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि पूरे 4 साल बाद आपको जो ऑप्शंस आएंगे, आपको 7 GE एक ही कोर्स के आपके पढ़े होने चाहिए. ओनली इफ यू हैव स्टडीड 7 GEs ऑफ वन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. दैट मीन्स अगर आपने 7 GE पॉलिटिकल साइंस के पढ़े तो आपको पॉलिटिकल साइंस में माइनर की डिग्री मिलेगी. माइनर का डिग्री में आपको ये फायदा होगा कि आपको उसमें आप मास्टर्स कर सकते हो, बट उसकी अभी स्पेसिफिकेशंस नहीं आई है. जब आएंगी तो वो क्लियर कर देंगे. तो आपको माइनर के अंदर मास्टर्स करने में ईज होगा. तो ये एक फ़ायदा है. फिर जैसे आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एनवायरनमेंट लिया था तो यहाँ पर आपको ये इंडियन लैंग्वेज या फिर कोई लैंग्वेज आपको लेनी है. फिर उसके बाद स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज की लिस्ट होगी और वैल्यू एडिशन कोर्सेज की लिस्ट होगी. वट एवर यू वांट टू टेक यू कैन टेक दोज कोर्सेज. अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद, तो ये हमारा फर्स्ट ईयर दिखता है इस तरीके से. फर्स्ट ईयर के बाद अगर आप डिग्री छोड़ते हो तो आपको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन इकोनॉमिक्स की डिग्री मिलेगी, बट देयर इज नो सेंस ऑफ लीविंग दैट आफ्टर फर्स्ट ईयर. सो दिस इज योर फर्स्ट ईयर. देन कम्स योर थर्ड सेमेस्टर. थर्ड सेमेस्टर के अंदर अब क्या चेंज आएगा? थर्ड सेमेस्टर के अंदर अगेन आपके पास 3 कोर हैं. अब नेक्स्ट आपके पास जो चौथा सब्जेक्ट है उसमें चॉइस है.
या तो आप डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव लो या फिर आप जनरल इलेक्टिव लो. माय पर्टिकुलर एडवाइस विल बी कि आप जनरल इलेक्टिव अभी ले लो और डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव आप बाद में भी ले सकते हो या उल्टा भी कर सकते हो. वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू, बट प्लीज डू रिमेंबर कि आपको अगर माइनर बनाना है किसी भी सब्जेक्ट को, सपोज आपका मेजर तो इकोनॉमिक्स में हो जाएगा, माइनर अगर आपको पॉलिटिकल साइंस या मैथ्स या फिलोसफी या से हिस्ट्री में बनाना है तो उसमें 7 GE उस डिपार्टमेंट के ऑफर्ड आपको पढ़ने होंगे. यहां पर आपके पास चॉइस है. जनरल इलेक्टिव तो आपको समझ में आ गया किसी और डिपार्टमेंट का है. डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव आपके खुद के डिपार्टमेंट का होता है. फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट आपको जनरल स्पेसिफिक डिपार्टमेंट डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव देगा. लिस्ट होगी, उनमें से आप कोई भी एक कोर्स उठा सकते हो. सो वो आपके डिपार्टमेंट का ही होगा, बट उसका अगेन इन सबका क्रेडिट 4 है. और उसके बाद एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, सेम आपके पास चॉइस एनवायरमेंट और लैंग्वेज के बीच में. अब यहाँ पर स्किल एनहांसमेंट और इंटर्नशिप के बीच में चॉइस आ जाएगी. इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, प्रोजेक्ट और कम्युनिटी आउटरीच. इसके बारे में अभी हमें डिटेल्स नहीं पता. यूनिवर्सिटी जब डिटेल्स देगी देन आई कैन टेल यू कि व्हाट ऑल इज द डिफरेंस. folks, I have to be bilingual in my explanation to reach out to a larger audience. So I'll explain myself both in English and Hindi. So there is this internal choice between first there is this internal choice between discipline specific elective and general elective. Then you have an internal choice between skill enhancement course. Again, you will have a list of subjects, and internship, apprenticeship, project and community outreach. इनके बीच में एक choice होगी. You have to take one of them. The details of this paper are yet to be out, so we don't know what is going to be the outcome. But once the details are there, I'll explain you again. So I'll explain that to you again. Then so there is this choice between these two, and then you have again a list of value addition course in semester 3. In all, you are studying 7 papers, 4 of these and 3 of these. So you are studying 7 and you get 22 credits out of it. Similar to this is your 4th semester. 4th semester is completely analogous to your 3rd semester. Again, you have 3 cores, the choice between DSE and GE, whatever you want to choose, a compulsory AEC. In the flip mode, choice between SEC and internship, and a value addition course. So this is how your 4th semester looks like. And if you see your second year looks like this. You have 7 papers in 3rd semester, 7 papers in 4th semester, and if you leave your degree after your second year, you will get an undergraduate diploma. So this is how your system looks like in year 2. Now let's talk about year 3, 5th semester. Now what is different in 5th semester is that you have 3 course, 3 core आपके अभी भी यहाँ पर. Now your discipline specific elective becomes compulsory. You don't have any choice. Your general elective becomes compulsory. You don't have any choice. Now you still have a choice between SEC and internship, apprenticeship, project and outreach. So your AEC and VAC are now gone. You now have a compulsory DSE and a compulsory general elective. Overall, you have 6 papers, 5 of which have 4 credits in weight, and 1 has 2 credits, total 22 credits. Then your 6th semester also looks like this. It's exactly the same 6th semester. You have 5 papers which are having 4 credits and 1 paper which has 2 credits. Same आपके पास 3 core, 1 discipline specific, 1 general elective and 1 choice between SEC and this. If you leave your degree after 3 years, just like your seniors, you will get an honors degree which will be called as BA Honors Economics. ये आपकी डिग्री का नाम होगा. You would have 132 credits to your name. But in my personal opinion, it does not make sense to do a 3-year course. What you should do is go for this 4th year. I'll tell you the reason. 4th year जब आप करोगे, then you will have only 1 core paper which is compulsory, and you would now have a choice between 3 discipline specific electives and 2 Gs. इन सब के बीच में आपकी चॉइस है. इन 5 पेपर्स में से यू कैन चूज एनी 3. सो 3 पेपर्स हेयर, 4th पेपर हेयर, एंड देन यू हैव अ डेजर्टेशन और अ प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स वी डोंट नो कि व्हाट इज द प्रोजेक्ट लाइक. व्हेन वी विल गेट द डिटेल्स आई विल टेल यू दीज आर द डिटेल्स, बट राइट नाउ वी डोंट हैव एनी डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क. बट डेजर्टेशन क्या होगा? इट्स अ रिसर्च, बेसिकली रिसर्च पेपर दैट यू हैव टू राइट, एंड इट हैज अ क्रेडिट ऑफ 6. And this research paper that you need to write is across 2 semesters. तो आपको दो सेमेस्टर्स में आपको ये रिसर्च पेपर लिखना है.
सेमेस्टर 7 एंड सेमेस्टर 8 के अंदर, बट दोनों सेमेस्टर्स में आपको 6 क्रेडिट्स मिलेंगे इसके। आपका प्रोग्रेस देखा जाएगा कि 7 सेमेस्टर में आपका प्रोग्रेस कितना और 8 सेमेस्टर में प्रोग्रेस कितना है। बाय द एंड ऑफ 8 सेमेस्टर योर रिसर्च प्रोजेक्ट शुड बी रेडी, योर रिसर्च शुड बी रेडी। सो एंड यू कैन डू योर डेजर्टेशन इन योर मेजर सब्जेक्ट, सपोज आपने इकोनॉमिक्स में ही करना है, या फिर आप माइनर सब्जेक्ट, सपोज आप कहते हो नहीं मुझे पॉलिटिकल साइंस या अप्लाइड साइकोलॉजी या हिस्ट्री या ज्योग्राफी, जिसके अंदर आपका माइनर है आप उसमें भी कर सकते हो, या प्रोजेक्ट कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो। अगेन डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट और एंटरप्रेन्योरशिप आर येट टू बी फाइनलाइज्ड। Overall, you have 22 credits out of your 7th semester. Similarly, out of your 8th semester is completely similar to your 7th. Same 22 credits. Again, आप dissertation continue करोगे इसी तरीके से. Now comes the important point, which is that how do you get these major and minors? If you see, a minor degree you will get अगर आप 7 GEs पढ़ोगे of the same subject. Suppose you're doing a major in economics, you do a minor in history. So for that you need 7 papers of GE that you need to study across your 4 years to get a minor in that particular subject. For major, again you have to study for 4 years because you have to study 20 course. 20 course you can only study in the 4th year. 20 course तो यहाँ पर ही खत्म होता है 7-8 semester में. So without this you can't do 20 course and 2 DSEs, 2 discipline specific elective, total 88 credits अगर आपके पास होंगे you will get a major in economics. One caveat is that there is a paper called as research methodology that you have to study either in the 6th semester or in the 7th semester. One of these semesters you have to study research methodology because it will help you in how to do research, how to write that dissertation paper. And you can take a research methodology of some other discipline as well. Economics, research methodology in economics भी ले सकते हो, research methodology in history भी ले सकते हो, philosophy भी ले सकते हो अगर आप उसमें dissertation लिखना चाहते हो तो. So you can take a research methodology in some other subject, but in that case, that will not be a DSE, that will be a GE for you. General elective हो क्योंकि आप किसी और discipline का ले रहे हो. Now after your 4 years, suppose you are not able to make any minor, then you will get a degree which will be called as Bachelor of Arts Honors with Research if you have done research in economics. Suppose you make a major and minor as well, then you get a degree Bachelor of Arts Honors with Research in economics as major and political science. अगर आपका 7 Gs you have taken in political science, then political science as minor. If you have done not a minor in Gs, you have done some project or entrepreneurship, in that case you will get a major in economics and a minor in entrepreneurship or academic project, and this is the other degree that you can get. The maximum and the minimum credits that you have to earn in a particular year is 18 credits at a minimum and 26 credits at a maximum, but you should definitely go for only and only limited credits. That means 26 credits ही आपको लेने चाहिए, 22 credits ही लेने चाहिए. Don't go for more or other credits. Then let's move to again I'll not get into this. Let's see कि ये marking कैसे होती है. Marking होती है on the basis of your credit system. So if you get 90 and above in your papers, then you will get, ये CBC नहीं है ये NEP है, तो you will get an outstanding grade and 10 points. If you get 80, between 80 and 90 you get 9 points. If you get 70 and between 70 and 80 you get 8 points. And if you get below 40 degrees you will be declared as failed and आपका essential repeat आएगा. You would have to repeat that paper again. So this is how your credits work. And आप क्या करते हो, आप multiply करते हो हर पेपर को उसके maximum credit के साथ. फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम क्रेडिट एक पेपर में कितने हो सकते हैं 40. जैसे अगर आप स्टैट्स की बात करो तो स्टैट्स के केस में आपके पास 4 क्रेडिट है. सो मैक्सिमम पॉइंट्स दैट यू कैन गेट इन स्टैट्स इज 40 क्रेडिट्स क्योंकि 4 is the score and suppose you get 10 points in that तो you will get 40 credits out of it. तो एक सेमेस्टर में मैक्सिमम जो होगा वो 220 क्रेडिट्स होगा एंड सपोज आपके 200 क्रेडिट्स आए तो आपका बेसिकली 200 अपॉन 220 आए. दिस इज योर सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज दैट यू आर गेटिंग. तो आपका 9 हो गया इस सेमेस्टर के अंदर. ठीक है. सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स. लेट्स सी इको ऑनर्स का कैसे होता है. इको ऑनर्स का आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो 3 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स हैं वो कौन कौन से हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स.
Then next आपका macro economics, mathematical economics, intermediate maths, intermediate stats. These are your tough papers, folks. You have to be very careful with these papers, especially maths and stats are really tough papers. Be very careful with these. There's huge failure rate in these papers. Then next आपके जो course आएंगे, you have intermediate micro, intermediate macro and advanced maths. Again a mathematical paper that you should be careful about. Then you would have in your fourth semester you would have intermediate micro, intermediate macro 2 and introductory econometrics. This is a paper that I teach, which is a combination of math, stats and economics. Then in your fifth semester you have game theory, which is a new paper, economic growth, introductory development economics. Then in sixth semester you have international development, development economics and Indian economy. Then you have economic development and policy in India in your seventh semester, and this is another paper that I teach, and topics in development and policy. So this is how your entire papers are spread. This I've already discussed. The general GE options are कि जो नॉर्मल लोग लेते हैं वो क्या करते हैं, या तो मैथ्स लेते हैं या पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, फिलोसफी, बीबी, कॉमर्स इस तरह से लेते हैं. कुछ लोग अनकन्वेंशनल चले जाते हैं कि वो हिस्ट्री ले लेते हैं, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, संस्कृत, आप कोई भी ले सकते हो. बट करियर ऑब्जेक्टिव के साथ में आपका क्या होना चाहिए, इफ योर करियर ऑब्जेक्टिव, ये डीएससी नहीं है, ये एक्चुअली में जीईज भी आप सोच सकते हो इस तरीके से. इफ योर करियर ऑब्जेक्टिव इज से डेटा साइंस, मैथ्स या मास्टर्स, तो यू शुड टेक मैथ्स. इफ इट्स यूपीएससी यू कैन टेक अप maths, political science, philosophy. If it's MBA you can take BB, commerce and maths. So this is what I wanted to discuss with you in general, in a nutshell. Now what I'll do is I'll open the floor so that you can ask whatever questions that you have, and then we can take further queries. Now questions, folks. क्या questions है बताओ. Take these questions here. You can raise your hands, folks. Okay. Yes, Nikhil. You can now talk. Unmute yourself. I can't hear you, Nikhil. You have to unmute yourself. Yes, sir. I want to ask about G's. Focus more on. You want to focus on what? GMAT or the B schools. Okay. Okay. So in that case, I would suggest that you take up. You can take up maths as a G. वो भी आपको help कर जाएगा. You can also take up. You can also take up options like एक तो वैदिक मैथ्स ले सकते हो आप. वैदिक मैथ्स विल हेल्प यू इन योर SEC, नॉट इन SEC, इन योर VSE. बट इसके अंदर आप मैथ्स ले सकते हो या फिर कोई कॉमर्स का सब्जेक्ट ले सकते हो, कोई मार्केटिंग करके कोई सब्जेक्ट होगा, उस तरीके के यू कैन टेक अप सब्जेक्ट्स. सो यू कैन प्रॉब्ली डू अ माइनर इन कॉमर्स देन इन दैट केस. बट मेरा प्रेफरेंस थोड़ा सा ना मैथ्स की तरफ इसलिए रहता है कि आपका एक टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड रहता है. सो मैथ्स एंड नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स में ना डिफरेंस बड़े आसानी से पता चल जाता है कि कैसा वो जो ओरिएंटेशन ऑफ ब्रेन है वो चेंज हो जाता है. सो इसलिए मेरा मैथ्स से फैसिनेशन है, बट आई डोंट, मतलब पीपल डोंट शेयर माई एंथुजियाज्म विद मैथ्स, तो इसीलिए यू हैव टू चूज योर ओन बोर्ड. बट मेरा जनरल ये कहेगा कि आप वैदिक मैथ्स लो और आप मैथ्स ले लो, नहीं तो आप कॉमर्स का कोई मार्केटिंग वगैरह ले सकते. आई टेक गौरीज क्वेश्चन. गौरी, आई विल अलाउड you to unmute yourself. You can ask your question. So as the UGC curriculum states that if we take a minor right now, we will only have to do masters for 1 year. Right? Yes, that's a very important question. It's really beneficial. That's a very important question. Yeah, that's a very important question, Gauravi. कि आपने अगर 4 साल की करी तो आपकी मास्टर्स 1 साल की हो जाएगी. नॉट जस्ट दैट, व्हाट यू ऑल्सो डोंट नो इज दैट इफ यू गेट अ गुड परसेंटेज, आई थिंक 75% है, if you get a good percentage then you can directly get into a PhD program. You can directly save one or 2 years. तो यूजुअली अभी क्या होता है, अभी हम 3 साल की डिग्री करते हैं, फिर जब 3 साल की डिग्री होती है तो हम बहुत सारे US यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एलिजिबल ही नहीं होते हैं. हमारे पास यूजुअली UK इंडस्ट्री, यूरोप खुलता है सिर्फ. तो what we can do is we can do a 4-year degree, do a 1-year masters, or if we get a good CGPA directly get into a PhD program. और 3 साल में आप PhD खत्म कर लो अच्छे से, 7 साल में आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री होके खत्म हो गया, जो आज की डेट के अंदर 3 + 2 + 8 टोटल 3 मतलब 8 साल में होगी, आपके केस में 7 साल में हो जाएगी. सो दैट यू कैन ऑल्सो डू. बट अगेन वो 1 साल की डिग्री हो जाएगी क्योंकि आपने जो रिसर्च वर्क है वो ऑलरेडी कर लिया है 1 साल में, और आपके पास पेपर्स भी काफ़ी कुछ टेक्निकल आपने पढ़ लिए हैं यहाँ पर. बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मास्टर्स, आई वुड सजेस्ट दैट टेक गुड पेपर्स.
जैसे ये प्रोग्रामिंग हो गई आर की, ये एक्सेल हो गया, ऐसे आप पेपर्स लीजिए जिससे आप स्किल्स बिल्ड करेंगे. But again, this is going to be a tough ride, folks. This is one of the toughest, if not the toughest course in the, I would say in the entire country, and Delhi University, in any case, this is the toughest course. So you've already chosen a tough course, and you have to live with it now, and you better start paying good attention to it. And regarding readings, I'll also talk about readings. Don't buy books. What we have is, हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी में रीडिंग्स होती हैं, ठीक है. वी डोंट यूजुअली बाय बुक्स. यू कैन गो टू दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड आई विल प्रोवाइड यू सर्टेन नंबर्स. आप वो नंबर्स को आप कॉल कीजिए, आप उनको बोलिए कि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ माइंड. चाहे आप SRCC की फोटोकॉपी शॉप पे बात कर लीजिए. SRCC वाला फोटोकॉपी वाला मुझे अच्छे से जानता है. सो यू टेल देम दैट आई एम कॉलिंग विद रेफरेंस टू सिद्धार्थ सर. ही विल गिव यू अ डिस्काउंट एज वेल एंड विल सेंड ऑल द रीडिंग्स एट योर होम. ठीक है, नहीं तो आप वहाँ जाके SRCC की फोटोकॉपी शॉप पे जाके आप रीडिंग्स भी पिक कर सकते हो. आई विल शेयर दी सिलेबस विद यू, और वी ऑलरेडी हैव दी सिलेबस ऑफ योर फर्स्ट ईयर. यू कैन जस्ट गो देयर एंड आस्क हिम फॉर रीडिंग्स. इफ यू वांट दी बुक्स, आई विल ऑल्सो सेंड ऑल दी बुक्स ऑन दी प्लेटफॉर्म. सारी आपके पास बुक्स भी आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएंगी. अक्षर, you can now ask your question. Good evening, sir. Good evening. See, course should I prefer? कौन कौन से SEC ऑफर हुए हैं अक्षर? कौन कौन से कंसिडर कर रहे हो? ऑफर तो बहुत सारे हुए हैं. नहीं, बट कंसिडर सारे तो कंसिडर नहीं कर रहे होगे ना. स्टैट्स विद आर अच्छा ऑप्शन है. ये तुम्हें थोड़ा सा डेटा साइंस की तरफ भी ले जाएगा और थोड़ा सा दिमाग खुलेगा, ठीक है. एंड उसमें थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का भी यूज़ आएगा. तो यू कैन टेक अप स्टैटिस्टिक्स. में स्टैटिस्टिक्स भी अच्छी होगी और आर प्रोग्रामिंग भी होगी. अगेन यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट, क्योंकि हो सकता है आपके कॉलेज में फैकल्टी को आर आता हो, नहीं आता हो. ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है. तो आर आप बाहर से भी सीख सकते हो. बाहर से इन द सेंस कोर्स एरा है एक वेबसाइट, EDX है, इन वेबसाइट्स पे भी आर है. तो और फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हैं, वो आप कर सकते हो. मेरा एक यूट्यूब चैनल है, आई विल सेंड यू द लिंक. I'll send you the link of the playlist. and मैं पिछले 4 दिन से आर पढ़ा रहा था श्यामलाल कॉलेज में. So I'll send you these lectures as well. तो ये बेसिक्स ऑफ आर आपको यहाँ से कवर हो जाएगा. बट फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स विद आर है, जिसके अंदर आपको जैसे आपको रिग्रेशन एनालिसिस रन करना कैसे होना चाहिए, हाइपोथेसिस टेस्ट कैसे करना है आर के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी. सो इट्स अ टफ सेमेस्टर इन द सेंस कि बहुत सारी चीज़ें हैं. You need to do it a lot by yourself. Don't be dependent on the college. ठीक है, क्योंकि कॉलेज पे 2 लेक्चर्स के अंदर, 2 प्रैक्टिकल के अंदर मुझे डाउट है कि 3 महीने में इतना सब कुछ हो जाएगा. So you have to do a lot of things by yourself. Akansh Gandhi, you can now ask your question. Akansh, you can unmute yourself. Yes, I can hear you, Akansh. Yes, I can. So I basically have 2 questions. The first, completely based on the interest in economics, and we're not clear on the future prospects. So how do we? So I would suggest that see the syllabus of the GE. It should have some kind of resonance in your mind. It should some kind of resonance should be there that okay, this is something that I can do, or this is something that I am probably interested in. For example, for me, it could be Python or R. These are 2 areas that I was if I was in your shoes, I would be really interested, because again, the world will be driven by data. So even at this age, 2 years ago, I did my PGDM in artificial intelligence and machine learning. So it's because of the fact that I knew that the world is turning towards data, and everything will be data driven in the next 10 years. Everything around you is being turned by artificial intelligence. So I can't be behind. On the basis of that, I took up Python. I took up this particular course for 2 years. So that was my incentive, because I foresaw that this is going to happen. And see, it is paying me huge rewards, because I'm one of the few professors who knows both R and Python, and I've studied it on the industry level. So again, it's helping me, placing me in multiple places. Now I can teach at multiple institutes the same thing. So I upskilled myself. Similarly, I would suggest that think in those terms, that what is relevant, how is it going to be relevant for me, and don't think just because of marks, just because of कि मुझे सिर्फ marks लाने हैं. Think about the broader sense that how it's going to help my career, and don't be dependent on the college. This is the worst thing that you can do, because it's a very crammed system right now. 3 months,
with 2 classes, 2 hours every week, I have my reservations that whether these huge courses can be done. So it has to be self driven. तो आपको Coursera, EDX, some of my videos, some कुछ सब कुछ ना कुछ ऐसा आपको करना पड़ेगा to cover that up. You can't just be dependent on college. Yes, what was the other question? Okay, yeah, the other question that I had. Okay, so let me just get the first question that I got out of whatever you said. What I wanted to ask was, if I take up political science or English literature as my GE, will it become redundant in the end? Because I do not have anything in mind as of yet, but I'm not going for a minor, is what I'm thinking, and I'm keeping myself open to every possibility right now. But shopping around different optionals, I mean, it's a strange kind of a strategy, but yes, you can. If you're not particularly wound up a particular option, then yeah, you can shop around different options depending on what you want to do, and especially if you don't want to do any other subject. I mean, you don't want to do political science, you don't want to do maths, you don't want to do computer science. If you're not very particular about it, then you can shop around every semester. In my personal opinion, if you take my opinion, you should take up 7 Gs of a particular area where you get your sights ki acha mujhe acha lag raha hai. So this is where I have interest. The natural choice should be maths or computer science. But again, that's a natural choice. It may or may not be true for everyone. So you can shop around. That's not a compulsion. I hope I've answered your question. It's like the maximum we can get is 26, the minimum we can get is 18. So that marginal thing is that suppose in semester 2 you say that I don't want 22 credits, I am taking one less paper. So in that case, in some other semester you would have to cover that up. Suppose in your second semester you say that okay, I'm taking one less paper, one less subject. Then that means maybe in your fourth semester you would have to take one more extra subject. So because ultimately it has to be 176 credits at the end of the day. So if you were reducing your load in one semester by one paper, you would have to cover that up in the respective semester maybe later. So that is the option that you have, but I would strictly advise against it. Fine. Janvi, you can take up your question. Yes. Was that will the list of the semesters? No, every semester this list will change. No, every semester this list will change. If I decide on learning. Yes. So second and third semester you will have a different set of options that will be given. So you can learn Excel in the first semester, you can learn R in the second, you can learn Python in the third. So you can there's a natural order that you're building up to it. But that also depends on whether your college is offering it or not. So I don't. There are a handful of colleges which can teach Python, for that matter. So and that's not Python also comes in various flavors. So one is pure coding Python, which a maths department can do. But the other flavor of Python is analytics with Python, which needs someone who has an approach of data scientist. So I'm very skeptical if more than 2-3 colleges can offer that paper. So no, you would have to see what all are the options floated by your college. Any other question, folks? Gurkirat. Here MA is only applicable in India, right? Abroad for our higher education for masters. So still, if you see majority of US universities have a 1-year masters. In fact, most of them masters program is US is just a money making tool. They have this system of directly picking up people for PhDs as well. So you can do a masters. There a masters will be of 1 year. If you want to do a 2 years masters, you can probably leave your graduation after 3 years and then you go to Europe. Europe has this option. Yeah, good evening, sir. Yes, Gurkirat. Okay. So, a GE in programming with Python. And I am always attracted towards computers and programming. So, should I opt for Python programming with Python? Another thing that they are also offering SEC in like blockchain development, introduction to blockchain, and also they are offering statistics with R as an SEC. So, is it appropriate to combine those like rigorous course in programming with Python
and statistics with R. So clubbing it would be appropriate or not? So from what I understand is that SEC is being offered as programming with Python. See, programming with Python would be hardcore programming. It would not be associated with economics per se. You will be learning programming as a computer scientist, as a computer science student, not as an economics student. Whereas if you study stats with R, you will be learning programming as an economist, not as a computer science student. So for example, writing functions is something that we don't, I mean, in general, hardcore computer science is something that is not useful for us. But if that is where your interest lies, and if you want to also take computer science as your G, then I can understand you can take programming with Python as the option. Otherwise, I would say that take stats with R. Stats with R suits well with economics. Programming with Python suits well with computer science. Go ahead. Ask. So they're offering programming with Python in GE as a GE. Okay, in GE. So programming with Python as a GE. Is this a computer science GE? Which department is offering? Is it a math? No, it can't be maths. Just check Gurkirat, which department is offering it. Because GE has to be department specific. Remember? GE is department specific. So you need to check which department is offering this GE. In all likelihood, programming with Python, if I remember clearly, this was an SEC, not a GE. And if it's a GE, it has to be computer science department or mathematics. But usually maths offers calculus in the first semester. Yeah, so is it appropriate to club stats with R and stats with R as an SEC and programming with Python? I think Gurkirat, you will be taking too much. I think you will be taking too much of load. Learning two languages at one go. I think plus with eco-honors. So टेक्निकली स्पीकिंग अभी जब आप पढ़ोगे तो आपको हवाइयाँ निकल जाएंगी जब आप मैथ्स पढ़ोगे. इट्स मैथ्स इज रियली टफ when you'll see the first, second and third semester maths. It will give you sleepless nights. This is the kind of curriculum that we have. So that's the reason that you have the maximum failures in eco-honors. तो इसलिए I wouldn't suggest कि इतना भी workload ले लो कि वो कवर ही ना हो पाए. I will then. So, sir, should I take programming with Python as a GE and some other thing as an SEC rather than stats with R? And हाँ, ऐसा कर सकते हो. Maybe when the core maths courses and then I should opt for stats with R as an SEC. Yes, you can do that. तब कर लेना. Will it help in the future, the job prospects, etc.? See, Python in general are going to help you in job prospects. अगर if you talk about industry, 70% of the industry runs with Python. R कहाँ help होता है? R academics में help होता है. It's an academician's language. It's not a language of this thing. Industry. Industry में R rarely you will find कि industry में R use हो रहा है. So it's mainly in this that this is us. ठीक है. तो industry standard देखोगे तो Python is important, so you can take up Python. Yes, Arnav, you can go ahead. And they are also offering SEP. सर जैसे आपने बताया था कि माइनर डिग्री के लिए हाँ और टोटल 4 ईयर डिग्री में 8 सेमेस्टर है. हाँ, 8 सेमेस्टर है. केस फर्स्ट सेमेस्टर में जो ऑप्ट किया नहीं क्यों? क्योंकि आपके लास्ट दो साल देखो ना. अरे लास्ट 2 इयर्स देखो. रुको, लास्ट 2 इयर्स देखो. यहाँ पर 2 GE ऑफर हो रहे हैं. यहाँ पर 2 GE ले लेना. इन 5 में से 2 GE लेने हैं ना. इन 5 में से कोई 3 लेना है ना. तो यहाँ 2 GE और 1 DSE भी तो ले सकते हो. तो अगर आपने 6ठे सेमेस्टर तक सिर्फ 3 GE पढ़े हुए हैं तब भी आप माइनर बना सकते हो. क्योंकि यहाँ पर आपने 2 GE और 1 DSE ले लिया, यहाँ पर आपने 2 GE और 1 DSE ले लिया. हो गया 7. समझ में आया अर्नव? और सर अभी जो कॉलेज ऑफर कर रहे हैं क्या किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? जी के ऑप्शंस. जी तो हर सेमेस्टर में जी तो हर सेमेस्टर में डिफरेंट वो है. हर डिपार्टमेंट डिफरेंट GE ऑफर करता है हर सेमेस्टर में.
ठीक है। और सर एमबीए के लिए आप क्या रिकमेंड? एमबीए के लिए या तो आप कॉमर्स ले लो जी, सॉरी, या मैथ्स ले लो जी, मैथ्स ले लो या कॉमर्स ले लो जी, दोनों में से कोई है। बट वैदिक मैथ्स ले सकते हो, एसईसी, वो भी अच्छा रहेगा। थोड़ी कैलकुलेशन क्विक होनी चाहिए। Sir, but can we take हाँ गुरकीरत, पूछो पूछो, जल्दी पूछो। sir can we take GE जैसे सर GE हमने सपोज 6 सेमेस्टर्स 7 सेमेस्टर्स पढ़ना है, हाँ राइट? सो can we do it like 3 सेमेस्टर्स में हमने एक GE ले लिया सपोज, एंड देन एक ब्रेक जी, एक और कोई आसान सा GE लेकर अपना 4th सेमेस्टर किया, एंड देन फिर हमने नेक्स्ट वो कर लिया, फिर से जी वही ऑप्ट कर लिया, ऐसा भी कर सकते हैं? हाँ, या तो कंटिन्यूअस करना है? नहीं नहीं, कॉन्टिन्यूस नहीं करना। टोटल जीज जो होने चाहिए वो 7 सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए बस। वो आप कैसे भी पढ़ो, वो हमें मतलब नहीं है। आपके पास मैक्सिमम आप 10 जी पढ़ सकते हो, मैक्सिमम है ये 10 जी, ठीक है। आपको सिर्फ 7 पढ़ना है, सिर्फ 7 पढ़ लो। अगर सिर्फ 7 पढ़ रहे हो तो 7 एक ही के पढ़ना है। अगर आपको 10 पढ़ना है तो उन 10 में से 7 एक सब्जेक्ट के होने चाहिए, तब आपको माइनर की डिग्री मिलेगी। यस नस्मिता, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस यू आर ऑडिबल नस्मिता। So would it be a fine option if I chose पॉलिटिकल साइंस, पर फिर पॉलिटिकल साइंस क्यों चूज करना चाह रहे हो? मतलब लाइफ इजी करने के लिए है तो ठीक है। बाकी पॉलिटिकल साइंस आप ले लो, मतलब माइनर अगर आपको बनाना है पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप बना लो। बट इन जनरल मैं पर्सनली कहता हूँ मैथ्स, बट मैथ्स फिर उसके साथ पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। ये आपके पास चॉइस है। करियर स्ट्रॉन्ग बनाना है, ज़्यादा ऑप्शन रखने हैं तो मैथ्स रखो। अगर ऑप्शन थोड़ी लिमिट करना है, थोड़ी लाइफ इजी करनी है, कई लोग हैं जो शुरू से यूपीएससी पढ़ना चाहते हैं। जैसे अभी 96th FC में आई टॉट दिस ऑफिसर बाय द नेम ऑफ रिया डाबी, टीना डाबी की सिस्टर थी, ठीक है। तो ये दोनों सिस्टर्स जो हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, एक का फर्स्ट रैंक आया, दूसरे का 15th रैंक आया। तो ये कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही प्रिपेयर कर रहे थे ये लोग। तो उन्होंने पहले से ही अपना पूरा यूपीएससी का माइंडसेट बनाया हुआ था, एंड इसलिए वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो। ऐसे ही मैं इस बार भी जब 97th बैच में अभी ऑफिसर्स को पढ़ाया तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, ऐसे ऑफिसर ट्रेनिंग को ऑफिसर ट्रेनिंग्स बोलते हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में बन गए। तो दे हैड दिस क्लियर, ये वो लोग नहीं है जिन्होंने लास्ट ईयर में सोचा अच्छा अब यूपीएससी उठा के लिख लेते हैं। इनके माइंड में क्लियर था कि हमें पहले से ही हमें यूपीएससी करना है, और उन्होंने अपना प्रेप उसी तरीके से शुरू कर दिया था। सो इफ दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू अप्रोच, then that's political science is right. But I would suggest that you are traveling in too many boats कि पहले मैं MBA कर लूँ फिर उसके बाद ये कर लूँ। You can do it if you want to do backup के लिए, but again political science if you want to take a minor, अगर minor बनाना है तो ठीक है। एंड साथ में वो सब्जेक्ट ज़रूर लेना जो आपको दिखे कि यूपीएससी में भी हेल्प कर रहे हैं, कि अच्छा यहाँ ये यूपीएससी में भी ये सब्जेक्ट है। जैसे एक फिलोसफी डिपार्टमेंट का एक जी होता है एथिक्स इन पब्लिक डोमेन, जो आपको जीएस में बहुत हेल्प करने वाला है। तो यू कैन टेक सच पेपर्स। अगर पॉलिटिकल साइंस कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर ऑफर करता है तो अगेन इट विल हेल्प यू टू टेक इट अप। तो इस तरीके से यू शुड आस्क योरसेल्फ दैट हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प मी इन माय करियर। आप यूपीएससी का सिलेबस अपनी दीवार पे चिपका लो और देख लो कि मैप कैसे करता है। यस अंशिका, so last 2 questions folks, Anshika and Shivansh. SSP क्या है? statistical software package. अच्छा, बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा एनालिटिक्स अगेन देखो, बिग डेटा एनालिटिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बट पढ़ाने वाले पे भी डिपेंड करेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। पढ़ा कौन रहा है और उसका कितना एक्सपोजर है, अपने आप से भी बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये आई थिंक बिग डेटा एनालिटिक्स पाइथन पे होगा ये मोस्ट 99% ये कोर्स। एंड स्टार्ट्स विद आर, आई वुड सजेस्ट कि विल हेल्प यू विद योर इको ऑनर्स। तो माई पर्सनल सजेशन इज गो फॉर स्टार्ट्स विद आर। बिग डेटा एनालिटिक्स आई वुड नीड टू सी कौन ऑफर कर रहा है, एंड क्या क्या प्रॉब्ली क्रेडिबिलिटी है पढ़ाने की। मतलब पढ़ाना चाहना एक चीज़ है और पढ़ा पाना दूसरी चीज़ है। अगर एसआरसीसी ऑफर कर रहा है तो ठीक ही होगा, आई एम श्योर किसी ने किसी को आता अच्छे से होगा, तो यू कैन टेक अ बिग डेटा एनालिटिक्स एज वेल। दिस इज द कोर्स विद पाइथन राइट? ये पाइथन के साथ है ना? आई थिंक 99% दिस इज बिग डेटा एनालिटिक्स। नहीं, बिग डेटा एनालिटिक्स आई थिंक इट इज थ्रू पाइथन।
इट इज़ थ्रू पाइथन. एनालिटिक्स किसी सॉफ्टवेयर पे तो करोगे, तो एक्सेल पे करोगे, आर पे करोगे, पाइथन पे करोगे. तो आई थिंक दिस इज विद पाइथन. तो यू कैन टेक अ बिग डेटा एनालिटिक्स एज वेल. बट अगेन मेक श्योर दैट यू नीड टू, मतलब अपने आप से काफ़ी कुछ करना पड़ेगा. 3 महीने बहुत कम ड्यूरेशन होगा अपने मतलब सीखने के लिए, स्पेशली 2 घंटे पर सेमेस्टर पर वीक. थोड़ा सा चैलेंज आएगा यहाँ पर. अंशिका, If you talk about taking a minor, how useful will that be in the college? अगेन आई मीन प्लेसमेंट्स में पर से आपको माइनर कोई हेल्प नहीं करेगा. मतलब अनटिल अनलेस से आपका कुछ ऑपरेशनल रिसर्च का कुछ है और आपके पास मैथ्स है तो आपको हेल्प कर जाएगा. आप किसी डेटा एनालिटिक्स फॉर्म में जा रहे हो और आपने कंप्यूटर साइंस के माइनर करा हुआ है तो आपको हेल्प हो जाएगा. या डेटा एनालिटिक्स में जा रहे हो और आपने स्टैट्स पढ़ा हुआ है तो आपको हेल्प कर जाएगा. इन दैट सेंस इट विल हेल्प यू. यस अंशिका, लास्ट क्वेश्चन. जनरल इलेक्टिव कौन ऑफर कर रहा है ये? Principles of microeconomics just shared. जनरल इलेक्टिव नहीं है. और प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स तो जनरल इलेक्टिव तो वैसे भी नहीं है. इट इज अ माइनर फॉर बीए प्रोग्राम जिनका माइनर होगा उनका पेपर है. एंड डोंट टेक अ प्रिंसिपल्स ऑफ, अगर कोई डिपार्टमेंट ऑफर भी कर रहा है डोंट टेक इट अप. आपके पूरी मार्कशीट के अंदर माइक्रो ही माइक्रो दिखना शुरू हो जाएगा. यू विल मेक योर जॉब ईजियर बट सिर्फ माइक्रो ही पढ़ रहे हो. आपने डाइवर्सिफाई तो किया ही So नहीं. also like in our batch. हाँ ऑफ कोर्स you can't take up. So that's so you can't take. It Hmm. was pretty clear. नहीं बट हो सकता है जैसे बीबी जैसे डिपार्टमेंट जो होते हैं कई बार बीबी और कॉमर्स भी ऐसे इकोनॉमिक्स वाले जी ऑफर कर देते हैं. तो डोंट टेक अप दोज जीज. Okay folks, so this is about our session. We'll be conducting more sessions in the coming week, more open sessions. I'll be putting this particular session on YouTube as well. And if you have more questions you can ping me, but don't expect an immediate reply. There are tons of messages that I get, but slowly and steadily I will reply, or someone on the group will. And you can ask on the group. I'll add more seniors to that particular group जो आपका 2020 to 26 का आपका जो eco honors का group है. I'll add more seniors from different colleges so that you have more people to help you around. And we'll be having some more open sessions on how to go about, say R अगर आप कर रहे हो, या how to study microeconomics, how to study maths, how to study other subjects. So we'll be having more sessions related to that. So thank you very much folks, and hope you are in a better position to analyze how your 4 years are going to be spanning out. Fine. Thank you very much folks. Thank you Khushi, and Bhavesh is not there. So thank you folks. See you. Good night.